I heard that you are not believing in yourself. Why? Why are you not believing in yourself even when everyone around you constantly keeps telling you that you cannot make it? तो क्या तुम्हें भी यही चीज़ अपने आप से बोलने की ज़रूरत है? Let me tell you one thing. You are the only one that you have till the date you die. तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है. You have nothing left to lose. तो क्या हर्ज है खुद पे विश्वास करने में? जब तुम लोगों से इन्फ्लुएंस होकर खुद के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव थिंग्स इन टू योर ब्रेन, देन वाई कांट यू इवन से अ पॉजिटिव सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ इन अ डे? जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो क्या तुम खुद से उम्मीद नहीं रख सकते दैट यू नो वॉट, आई कैन मेक इट, आई डिजर्व टू बी एट टॉप? और इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है. Get rid of the limiting beliefs from the environment. What do you think कि हमारे अंदर जो thoughts हैं वो कैसे create होते हैं? It's when we are born as babies, we look at our parents, we look at the people around us, we look at the way they think, and we start adapting those beliefs and behaviors because we grew up in that environment. And if your parents have limiting beliefs about money, about success, about passion, then most probably you will think the same about these things. You are living for people's expectations. You know what? जब कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो लोग, सोसाइटी के और उसके पेरेंट्स अपने आप उसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं दैट ही विल बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और एन IAS ऑफिसर. बट वाई दे डोंट आस्क हिम और हर कि वो क्या करना चाहता है, उसका पैशन क्या है? अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे जिसमें आपका पैशन है, जो आप दिल से करना चाहते हो, then mark my words, you will never believe in yourself that you can make it. It's only when you do the right things, it's only when you start following your passion, you start to believe in yourself that you know what, I can make it. Because that's the thing I love to do. If you are only living for people's expectations कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में सोच रखा है, सोसाइटी मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि मैं ये करूँगा, तो तुम हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे. So the main thing is, please get rid of the limiting beliefs of society and do what you love. Just follow your passion and automatically you will start believing in yourself. Just remember one thing. No matter how hard you try to do something, your environment will always dictate who you are. This is very, very true. If you are trying to love yourself constantly or believing in yourself, but you have that one person around you constantly telling in your ears that you cannot make it, that you cannot achieve it, at some point you are start going to believe that person over yourself because that's the environment you have. अगर कोई बंदा आपके आसपास बार बार आपको डिमोटिवेट कर रहा है, then please try to minimize contact with that person, whether it's your best friend, whether it's your family member or anyone around you. Just try to minimize the contact with that person because your environment influences you to a great extent. Do you know you have a very great advantage if you just start to believe in yourself, because 99% of people do not believe in themselves at all. 99% of people are afraid of others' opinion, about society, about what will people think about them. But you have to be that 1% that just believe in themselves, that doesn't care about what everyone else is saying. You just have to put in effort, you just have to do the right thing, you just have to follow your passion. That's all. Now the most important thing is that you should have integrity in your life. मतलब कि your actions should match your words. जब तुम सबके सामने बोल के आए हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पब्लिकली अपने गोल्स, अपने प्लान्स डिस्कस करके आए हो, then you should take your word for that. It's like you have told 10 people that these are your goals, this is what you want to do in your life, these are the plans you have, but your daily routine does not reflect a little bit of effort that you are putting in to achieve that goals. What's your daily routine is reflecting? Just scrolling reels, just being lethargic all day and doing nothing, and then expecting that I will achieve everything. That's not it should be done. तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क डेली करना पड़ेगा जो तुम्हें अपने गोल्स के एक स्टेप और पास लेके जाता है. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव
that a happy and successful version of you exist. तुमने कभी ना कभी तो अपने दिमाग में कोई इमेज बना रखी होगी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं वैसा दिखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे पास ये होगा. तो तुमने ये सब अपने दिमाग में सोच रखा होगा. एंड यू नो वॉट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कोई भी चीज़ दो बार होती है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार रियलिटी में. तो जो आपने अपना वर्जन सोच रखा है वो कभी ना कभी तो रियलिटी में होगा, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक कंसिस्टेंसी. वो होगा ज़रूर एक दिन, लेकिन उसे एफर्ट चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए तुमसे. और जब तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे तो तुम्हें रिजल्ट दिखने लग जाएगा, और वो रिजल्ट तुम्हें मोटिवेट करेगा खुद पे विश्वास करने के लिए. सो डू द थिंग्स फॉर योर सेल्फ. There is something great waiting for you. You just have to start. And remember, you have to believe that you are meant for great things. You are the best thing that this world will ever see. I hope you like this video, and if you like this, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. We'll meet in the next video.